What is robbery? What is robbery versus theft? What is dacoity in IPC? What is difference between dacoity and robbery? Hello guys, this is Jolly Tiwari from LawSikho. Today we are going to learn about the very important part of the IPC, which is also important from the judicial point of view, that is robbery, defined in chapter 17 of offenses against property. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इससे रिलेटेड कई सेक्शंस के बारे में जुडिशरी में काफ़ी कुछ पूछा गया है, जिसमें से कुछ चीज़ों के बारे में जिन्हें हमें पता होना चाहिए, लाइक रॉबरी, एक्सटॉर्शन, थेफ्ट, डेकोइटी में डिफरेंस क्या है, ये माइन्यूट चीज़ें नहीं पता होती लोगों को. सो वी विल डिस्कस अबाउट देम. सो बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो आई वुड लाइक यू to like my page, like my channel, and like my page on Facebook and Instagram. The links have been provided below. So let's start with our very first section, that is robbery, defined in section 390 of IPC. Now what is robbery? अब आप IPC या की बेयर एक्ट में जब पढ़ोगे रॉबरी में क्या लिखा हुआ है. रॉबरी इज डिफाइंड एज समथिंग विच इज इधर एक्सटॉर्शन और थेफ्ट. अब आप ये बोलोगे कि ये एक्सटॉर्शन या थेफ्ट है तो हम इसके लिए अलग से सेक्शन क्यों बना रहे रॉबरी का. सो रॉबरी का अलग से सेक्शन नहीं है. रॉबरी इज लाइक थेफ्ट अकम्पनीड विद रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, डेथ एंड हर्ट, डेथ और हर्ट, और इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. अब ये थेफ्ट से रिलेटेड हो गया. अब सेम चीज़ हम एक्सटॉर्शन के साथ रिपीट करेंगे. रॉबरी इज extortion accompanied with instant hurt, instant death or instant wrongful restraint. So even attempt to commit these things is subjected to robbery. So robbery is not just theft or extortion but accompanied with wrongful restraint, hurt or death. So ये था बेसिक डिफरेंस रॉबरी, एक्सटॉर्शन और थेफ्ट में. अब एक्सटॉर्शन और थेफ्ट एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है. नाउ एक्सटॉर्शन इज लाइक पुटिंग अ पर्सन इन अ फेयर टू डिलीवर समथिंग. और थेफ्ट में हम क्या करते हैं, थेफ्ट में हम विदाउट कंसेंट, बंदे के बिना कंसेंट के ही हम कोई प्रॉपर्टी जो कि मूवेबल हो या मनी हम ले जाते हैं. तो ये बेसिक डिफरेंस है एक्सटॉर्शन या थेफ्ट में. थेफ्ट में हम उसे फियर में नहीं डालते हैं. नाउ हम इलस्ट्रेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. इलस्ट्रेशंस मीन्स द इलस्ट्रेशन इन बेयर एक्ट, बिकॉज इलस्ट्रेशन से बहुत क्वेश्चंस आ रखे हैं जुडिशरी में. सो आई फाइंड इट लाइक गुड कि हम इलस्ट्रेशन से थोड़ा ज़्यादा पढ़ें. सो इलस्ट्रेशन नंबर 1, लाइक इलस्ट्रेशन इसमें ये है, इसमें थेफ्ट के बारे में बताया गया है, अकम्पनीड विद रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. लाइक ए confines Z and takes his money and jewels away with him. So here the theft is combined with wrongful restraint. So ये robbery में convert हो गया. Now second illustration is about the extortion accompanied with instant fear of hurt. A meets Z on high road, shows him pistol to get his purse. So here A has subjected Z to fear of instant hurt. So here it is extortion accompanied with fear of instant hurt. So this constitute to robbery. Now we have discussed robbery. अब हम हमारे दूसरे पार्ट में आएंगे, which is difference between robbery and theft. So now what is theft? Theft has been defined in section 378 and robbery has been defined in section 390. Now theft is a part of robbery, whereas robbery ये अलग है theft से. कैसे कि robbery is when theft is accompanied with, as I told you before, wrongful restraint, hurt or death, or even attempt to commit robbery is punishable under the code. So now we will come to our third part, which is dacoity. Dacoity has been defined in section 391 of IPC. जैसे theft और extortion robbery का initial part था, वैसे robbery initial part है dacoity का. Dacoity is just robbery committed by 5 or more than 5 person with the same intention or even attempt or aid to commit robbery by 5 or more person will come under dacoity.
सो ये हो गया डेकोइटी. डेकोइटी मतलब it's just robbery committed by 5 or more than 5 persons. So we covered dacoity here. Now we will come to our very fourth part, that is difference between dacoity and robbery. So what is dacoity? Dacoity, where it has been defined, dacoity has been defined in section 391 of IPC, whereas robbery has been defined in section 390 of IPC. अब dacoity और robbery एक दूसरे different कैसे हैं? Robbery is just a part of dacoity, and dacoity, to commit dacoity, it is essential that robbery has been committed or even attempt to commit robbery by 5 or more than 5 persons. So ये है difference between robbery and dacoity. So guys, here we have covered 4 very important topics, and हम इसे इंडिविजुअल भी कवर करेंगे हमारे आगे आने वाले वीडियोस में. तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को, अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप बताएं, और do tell what are the problems, or we can make any further changes in our next videos. And thank you for watching our videos, and have a nice day.